Hello, everybody. Today I'm here with a new lecture of Discovery of Neutrons. Chapter number 2, Atomic Structure. 2.2, Discovery of Neutrons. Today we will be discussing the experiment and the properties that was done to found or to know to discover the particle neutron, and after that its properties. So starting with a very basic, that who discovered neutron was discovered by James Chadwick. Neutron was discovered by James Chadwick in 1932. And like until 1932, scientists used to think that there are only two particles present in an atom, which are protons and neutrons, and no other particles exist except that, because atom as whole is a neutral particle. But in 1932, oh sorry, in 1920, Rutherford predicted that some neutral particles must also be present in the atom, because he noticed that the atomic mass of atom could not be explained if it were supposed that atoms had only electrons and protons. What happens? Ke, suppose we have an atom. Now, every scientist, Rutherford J. Thomson, used to think that there are proton and neutrons in an atom. Proton and electrons in an atom, and they were calculating its mass. But what was happening? That there was a difference in mass. The mass was always larger than that of the mass of the proton and neutron of the atom that was present or that was being calculated. अब हो क्या रहा था कि एक एटम है, उसके अंदर तो उनको पता था कि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है. अब वो उसका एटॉमिक मास निकालने लगे, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन एटॉमिक मास निकाल रहे तो उससे वो इट वाज नॉट राइट, ट्रू नहीं आ रहा था, सही नहीं आ रहा था. मतलब उसमें एटम का जो था, जो प्रोटॉन था और जो न्यूट्रॉन था, उसका डिफरेंस आ रहा था. सो 1920 में रदरफोर्ड जो के उस पे काम कर रहा था, एटॉमिक थ्योरी दे रहा था, उसने प्रिडिक्ट किया दैट that some neutral particles are also present inside of the atom. He said कि कोई neutral particle है, neutral जिसका कोई charge तो नहीं है, लेकिन वो present है एक atom के अंदर या एक उसके अंदर, किसी भी atom के अंदर. फिर 1932 James Chadwick performed an experiment that proved certain neutral particles also exist in the nucleus of an atom, and he was awarded a Nobel Prize in physics in 1935 for this chemistry. अब भाई जब रदरफोर्ड ने बता दिया, प्रिडिक्ट किया सॉरी, कि एटम में कुछ तो है, तो सब साइंटिस्ट ने काम करना स्टार्ट कर दिया उसके ऊपर. फिर जेम्स चैडविक ने भी स्टार्ट किया. इन 1932 जेम्स चैडविक, जिसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसके तहत उसको पता चला कि कोई न्यूट्रल पार्टिकल्स भी हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं. तो उसको 1935 में इस बात के लिए नोबेल प्राइज मिला. तो अब हम चलते हैं एक्सपेरिमेंट की तरफ. तो एक्सपेरिमेंट, जैसे कि हमने पहले पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा कि जैसा एक्सपेरिमेंट उसने किया, उन लोगों ने किया था, जो रदरफोर्ड एंड गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उन्होंने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का पता लगाया, इसी तरह से जेम्स चैडविक ने भी कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. बट उसके एक्सपेरिमेंट डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट नहीं था, वो कुछ और चीज थी. भाई जेम्स चैडविक ने क्या किया कि एक वैक्यूम जगह बनाई जिसके अंदर से रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स पास नहीं हो पा रहे थे. ठीक है, उसने वो बनाया एक वैक्यूम, जिसे हम वैक्यूम कह सकते हैं, जिससे कोई इधर उधर से spontaneous emissions does not go out from there. He created that sort of box,
and in that he placed polonium. ठीक है, polonium, polonium was placed उसके अंदर. एंड एज वी नो कि जो पोलोनियम हो गया और जो रेडिएक्टिव मटेरियल्स होते हैं, दे प्रोड्यूस spontaneous emissions which are in the form of particles and radiations. So polonium ने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स रेडिएट की. अभी रेडिएट करने पे हम बाद में बात करेंगे क्या क्या हुआ फिर, लेकिन पोलोनियम क्या करता है, अल्फा पार्टिकल रेडिएट करता है, जो कि उसने इधर रखनी हुई. ठीक है, फिर उसने उसको जो था ना बेरिलियम लिया. बेरिलियम, वी नो बेरिलियम क्या होता है. बेरिलियम एक मेटल है. उसने वो मेटल फॉइल ली बेरिलियम की और इधर रख दी. ये मेटल फॉइल है जो कि बेरिलियम की है. ये है. ठीक है, या बिल्कुल थिन फॉइल बेरिलियम की रखी टारगेट. अब उसने देखना ये था कि जब अल्फा पार्टिकल जाके हिट करता है उसकी तरफ, बेरिलियम की तरफ, तो क्या चीज निकल के आती है. ठीक है, ये वो देखना चाह रहा था. अब होता क्या है कि भाई पोलोनियम रख दिया उसने जहाँ पे इधर उधर पोलोनियम की रेज ना जाए. सिर्फ क्या हो, सिर्फ यहाँ यहाँ पोलोनियम की रेज नहीं जा पाए, क्योंकि अगर इधर उधर होंगी तो ये हार्मफुल होती हैं. तो पोलोनियम की अल्फा रेज जो थी उन्होंने क्या किया, ट्रेवल किया स्ट्रेट टूवर्ड्स बेरिलियम. अब हम समझे कि जब वो बेरिलियम के ऊपर आके अल्फा रेज लगी तो क्या हुआ. अब ये सिनेरियो हमें समझना है. So you got to know कि क्या हो रहा है यहाँ पे. That alpha particle rays coming out from the polonium source, the polonium atom, and are hitting to the beryllium sheet, the metal foil of beryllium, with four protons and 9 neutrons. Oh, so bad. I read so bad. I know. Sorry. Okay, 4 neutrons. अब we got to know यहाँ पे उसने what happens कि यहाँ पर आता है अल्फा रेज और जाके हिट करते हैं बेरिलियम रेज को. अब नाउ वी हैव टू स्टडी इन डिटेल कि अंदर क्या होता है फिर बेरिलियम रेज के. अब when alpha ray particles bombarded into beryllium, जो आपको पता है अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, विच इज हीलियम न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल. ओके, और जब वो बेरिलियम जो है जो कि 4 प्रोटॉन और 5 न्यूट्रॉन का है, मतलब 9 बना, उसका एटॉमिक मास हो गया. क्या बनता है उसका एटॉमिक मास, 9, जो कि आगे हमारे देखेंगे कि बहुत काम आने वाले हैं हमें बेरिलियम से. तो जब अल्फा पार्टिकल आगे बेरिलियम पे हिट करते हैं तो यू नो व्हेन अल्फा पार्टिकल पास इनटू द न्यूक्लियस दे चेंज द एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ एन एटम. So what happens when the alpha decays happen with beryllium of 9 atomic mass and helium of 4 atomic mass? The transmutation is reaction is occurred when one type of element changes into another type. अब ये we will study alpha decay further in the chapter in the topic of radioactivity. लेकिन अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं. तो क्या होता है कि जब बेरिलियम हीलियम जो होती है वो बेरिलियम के ऊपर आके लगती है. बेरिलियम जिसके पास कितने हैं न्यूट्रॉन, जिसके पास 5 प्रोटॉन है. ओके, वो सॉरी 4 प्रोटॉन है, 4 प्रोटॉन. ओके, व्हाट एम आई, जिसके पास क्या है 4 प्रोटॉन है. तो उसके अंदर जब हीलियम न्यूक्लियस जाता है जिसके पास खुद के 2 प्रोटॉन है, तो इन रिजल्ट दे गेट अ बिगर नंबर ऑफ प्रोटॉन which is equals to 6 proton. Okay, which is equals to 6 proton. अब वी नो कि 6 प्रोटॉन किस एलिमेंट का होता है, 6 प्रोटॉन इट्स ऑफ कार्बन. तो कार्बन के क्या हो गए, 6 प्रोटॉन हो गए. सो दैट एलिमेंट टर्न्स इनटू कार्बन. और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो भी 5 पे होते हैं.
और एक और न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल का चले जा रहा है, +1 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन। तो कितने के इक्वल हो जाते हैं वो 6 के इक्वल हो जाते हैं, 6 न्यूट्रॉन के। तो 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन मेक कार्बन 12, 6 12 वाला कार्बन बनाते हैं। और व्हाट हैपेंस, अब यहाँ पे एक और अल्फा वो सॉरी न्यूट्रॉन रेडिएशन जो होती है वो निकलता है, एक न्यूट्रॉन इज इमिटेड आउट। अब न्यूट्रॉन इमिट होता है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। वो न्यूट्रॉन ट्रेवल स्ट्रेट इन डायरेक्शन एंड हिट्स द सोर्स ऑफ पैराफिन वैक्स। Paraffin wax is a hydrocarbon which consists of hydrogen and carbon inside of this. When neutrons enter the hydrogen particle, and paraffin wax, it is very penetrating because of no charge. So it kicks out the proton out of the paraffin wax. And here we have placed a gas-filled chamber of a charge detector. Okay, it's a charge detector. अब चार्ज डिटेक्टर किस तरह होता है, इसके ऊपर एक लगी होती है हमारे पास नीडल, जो कि जैसे ही हमारे पास मतलब चार्ज आता है तो वो डिफ्लेक्ट होती है, लाइक इट पॉइंट्स टुवर्ड हेयर और देयर. So when proton goes inside of this chamber, so the needle start to indicate that there is a positive charge. So thus we got to know that something was given out of the beryllium atom, which targeted paraffin wax and kicked out of the protons of their wax. So अब ये समझ में आ गया, लेकिन अभी तो प्रोटॉन निकला, उससे हमें क्या पता कैसी रेज निकली, क्या निकला है, ठीक है। हमें ये क्या चार्ज है उसका, क्या इलेक्ट्रॉन था कोई, क्या निकला उसके अंदर से। तो फिर क्या करते हैं कि जो पैराफिन वैक्स होती है इसको यहाँ से हटा देते हैं, मतलब वी kick it out of this experiment. Direct when alpha particles are bombarded onto the beryllium atom, which turn beryllium into carbon and a neutron. When the neutron is directly gone into the chamber and detects no sign, and then we detect no sign over here, no change or no deflection in this needle. Thus, it indicates that neutron does not possess any charge, which shows that these particles do not possess any charge. So what we named them over here, these protons were then named as neutral particles. Okay. Do you understand this atom and everything else? Now we should move towards the properties of neutron. First of all, here you can see that a stream of we should read it too. A stream of alpha particles produced from polonium was directed at target metal foil 4Be9, which I told you that alpha particle ka stream produced hua which directed toward beryllium and kicked out neutrons from that beryllium and turned that beryllium into carbon. Here it is written there. Here you can see this is the reaction which is written over here. अब these radiations were called neutrons और इनको न्यूट्रॉन का नाम दे दिया गया बिकॉज जो चार्ज डिटेक्टर था उसमें इनका जो साइन था या कोई चार्ज था that seemed to be neutral. अब now we should come on properties of neutron. So neutron have the following properties. Okay, discussing. What we discussed in the last lecture, that the rays that were discovered were first placed into the electric field and then into the magnetic field. Here I have made them so close, which does not mean that we place them together, which is अलग-अलग हमने पहले इनका क्या किया, और north pole, ठीक है। We pass these neutral particles which were not named till then, which were called neutral particles at that time, from electric field, and they show no deflection and passed straight. What happened? They showed no deflection and passed straight of the atom, which indicates they do not have any charge in them. And when we pass them from the magnetic field, it deflected towards the North Pole, which shows
that it possesses a mass, which shows that it possesses mass and no charge. Now, free neutron decays into a proton with the emission of electron and neutrino. Here, what is it telling? It is telling that neutron cannot stay as a single particle outside of the atom. We know that atom is a neutral particle, but kicking out neutrons and electrons from the nucleus can make the atom unstable and as well as the particle that have been come out. अब न्यूट्रॉन लिया एक हमने भाई, हमने फिर न्यूट्रॉन था ये, फिर उसने बताया कि न्यूट्रॉन जो है वो कभी भी एक सिंगल पार्टिकल रहता ही नहीं है. वी नो दैट इट्स न्यूट्रल, बट हमने ये नहीं कहा कि इसके ऊपर जीरो चार्ज है. इसके ऊपर जीरो चार्ज नहीं है. जीरो चार्ज का मतलब होता है कि इसका चार्ज जो है वो क्या नाम है ही नहीं कुछ भी, लेकिन ये न्यूट्रल पार्टिकल है. मीन्स इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है. इसके अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है. ओके, प्लस a proton and a neutrino. What is neutrino? You will ask me what is neutrino? Neutrino actually is a particle of a small mass, but it does not contain any mass. It does not have any mass and no charge. It is only consisting of energy. Neutrino is a particle or a sub is a particle even more smaller than electron and proton, does not possess any charge or mass, but it have energy. Energy is released from neutrino. Neutrino is a energy particle. Okay, these neutron as a whole, we know that they are general. Sorry. They are neutral particles, which means they cannot ionize gases, which means they don't ionize anything, which is, any atom. They cannot ionize any atom. They can not like go into the atom and kick out of electrons over there. Okay. Now they are highly penetrating particles. As you know, that penetration is inversely proportional to the mass. If a particle, charge. If a particle has charge, it have less chances to penetrate more. But a particle who does not possess charge, is able to highly penetrate into an atom. What happens when we have an electron? So electron penetrating into an atom. Here is an electron going inside an atom and attracting towards proton and kicking out of because of the repulsion force, it kicks out electrons from the atom. And same goes with the proton. Proton is like attracting electron and kicking out electrons from an atom. But it does not happen with neutron because neutron does not possess any charge, so it directly penetrates so highly into an atom. When neutron travels with energy 1.2 mega electron volt or more, they are called fast neutron. And when they have energy below 1 eV electron, they are called slow neutron. So what happens? There are two types of neutron, which are, one is slow moving neutron, and fast moving neutrons. Sorry, correction please, whenever I mistakenly say electron instead of neutron, so please correct it. Yeah, the slow moving electrons, which are of below 1 electron volt. Okay, they are more reactive and they have effective collision. But the 1.2 mega electron volt neutrons deflect and don't react much. They deflect into, so that's why they do not react so much. That's the difference. They're not deflected in electric and magnetic field, which I told you, and they can knock out high speed proton from paraffin
water vapor, and cellulose, which I told you in the experiment which we have been discussed, that they kick out protons from from an atom when there is like when they are high speed or they are in high speed. So slow neutrons are more affected than fast neutrons for the fission process that I told you. Slow neutrons are more affected because fast neutron deflect from that proton in fission process. When neutrons are used as projectiles, they can carry out the nuclear reaction. So, I told you in the last lecture that there are two type of reactions, chemical and nuclear. Chemical changes are occurred in electrons, but nuclear reactions occur in the nucleus. So, in the experiment, we also had a very good example of this, that they carry out nuclear reaction, that when a neutron is highly is sped up or it is bombarded into the nitrogen atom, it turns decay. What it do? It decays the atom's nucleus and turns it into a new type of atom. So here you can see what happens when neutron moving with fast speed collides with the nitrogen. It kicks out neutron and proton from that atom and turns it into another kind of atom, releasing alpha rays. अब एक एटम जो था उसके ऊपर आके न्यूट्रॉन की हाई वेव्स ने हमला कर दिया भाई, ठीक है, हमला किया, तो क्या हुआ कि वो जो एटम था वो चेंज हो गया और उसने अल्फा रेज दी, अल्फा रेज इमिट की. अब when slow moving neutrons hit the Cu metal, और जब कोई स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन आता है तो हिट करता है Cu मेटल के, तो क्या होता है कि बीटा रेज इमिट होती हैं. स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन रिलीज बीटा रेज, and when neutrons use as projectile, they carry out nuclear reaction. Because of their intense biological effect, they are used in treatment of cancer. Here it shows that their intense biological effects, they are used in treatment of cancer. What happens in a body? There are so many cells containing cancer cells. When neutrons, so slow moving neutrons come into them, like bombarded onto that area or that piece, they decay there and turn that atoms or that cells into another kind of atoms, and the cancer cells are dead. So this is the thing. I hope everybody, you all have understood this. Here I have some more points which I want to discuss. That what is the difference between a gamma ray and a neutral ray? I should write over here. Till then you can wait. The difference between gamma and neutral rays. So gamma rays consist of energy particles, which are photon. You know, photon are light energy particles. But on the other hand, neutron consists of neutrino, which is present inside the neutrons, which have been discovered over here too. And these photons are made up of tiny bosons which are massless particles and interact with things. Okay, they are interactive. But on the other hand, neutron are made up of leptons, which are non-zero in mass and non-interactive, which do not interact with things. This is the small difference between gamma rays and neutral rays. And one more thing that I want to add here, that neutrons have decaying power, which means that they can decay. Decay is a process which happens inside of the neutron. Without charges, it is decay, okay? But including charges, it is ionization. It cannot ionize, but it decays.